porneia, from where we have the word pornography. आपको मालूम, pornography is not just bad habit. It is a deep-seated bondage. And one has to be delivered through the blood of Jesus Christ. Porneia means depravity, iniquity, wickedness, malice, evil purpose, conspiracy. Jesus in an instant scanned their corrupt heart. धर्म के ठेकेदार और नेता लोग, आपको मालूम, जब धर्म और राजनीति मिलती है तो क्या होता है? आप गुजराती हैं, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या किया, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा लीथल वेपन, दुनिया का इतिहास पढ़ के देखें, मैनकाइंड डिस्ट्रॉय हुई जब धर्म और करप्ट राजनीति। आपको मालूम, हमारे देश में पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स। नए नए हथकंडे नेता लोग बनाते हैं। तो ये नेता और धर्म गुरु ये मिलके आगे हैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, और इनके हितों में कुधर्म है, इनके हितों में जाल साजी है, और प्रभु यीशु मसीह को ये क्या करना चाहते हैं? फांसना चाहते हैं। इनकी हिमाकत देखें, जुर्रत देखें, दुनिया को पैदा करने वाले परमेश्वर को। You know, Jesus always goes beyond words. He cannot be just mesmerized by the words. He says to the people of his days, he says, you call me Lord, Lord from your lips, but your hearts are far away. Jesus is not interested in lip service. He longs for a heart connection. He in an instant perceived their wickedness. आपको मालूम Jesus ने क्या बोला उनको? But Jesus perceived their wickedness and said, why put ye me to test, you hypocrites? यीशु मसीह एकदम उन धर्मगुरुओं को और उन सियासी लोगों को, यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरा इम्तिहान क्यों लेते? तुम मेरी परीक्षा क्यों करते? और टेस्ट के लिए किंग जेम्स में लिखा, why tempt ye me? तुम मेरी आजमाइश क्यों करते हो? टेम्प्ट के लिए जो वर्ड है वो है pharisoi, which means make trial or test someone craftily. Malicious manner of bringing someone to judgment. Trying to test someone's virtue, character, by enticement to sin. To solicit to sin, sinister way of seeking proof. The devil was behind it. The enemy, Satan, orchestrated, and he infiltrated the mind of the Pharisees and the Herodians, and he gave them a really bright idea to catch Jesus in their words. And the devil was behind it to ensnare यीशु को, जैसे शैतान ने टेम्प्ट किया विल्डरनेस में, बिल्कुल वही आइडिया है। यीशु मसीह ने वही कहा कि तुम मुझे टेम्प्ट, और वही वर्ड मत्ती की इंजील 4 अध्याय में इस्तेमाल हुआ, जब शैतान आके यीशु मसीह को क्या करता है? टेम्प्ट करता है। तो यीशु मसीह कहते हैं, why tempt ye me, ye hypocrite? मैंने कल आपको बताया था, hypocrite. The original word for hypocrite is hypokritos, which simply means an actor. You know, there are so many actors in the church today. You know, we act Sunday morning for a couple hours or hour and a half, and we act really beautifully. Even the angels that come to attend the service, they become angry. Yeah. Saturday night, he was different. What happened to him? We have a mask that we put on Sunday morning. In mask of, politeness, neatness, gentleness, and kind of superficial type of spirituality.
and we come to the church, and after we are done, we remove that mask. And Monday morning, we put on a secular mask that remains on us for 6 days. और कौन ज्यादा जो मास्क यूज करते हैं वो सेकुलर है, इसलिए तो हमारा ये चर्ची मास्क है वो ब्रांड न्यू रहता है, फ्रेश रहता है। सेकुलर मास्क फंसा हुआ होता है क्योंकि इसको सिर्फ संडे को इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम यीशु मसीह ने 12 मरतबा से ज्यादा हिपोक्रेट वर्ड यूज किया। एक्टर, I told you last time, hypocrite is the one who denies his own image. Hypocrite is the one who fights with his own self. When the Spirit of God punctures his conscience and tells him to come to God, he fights, resists. Or what he does, he takes the religious garb, put it on and try to just specify that anguish that the Holy Spirit is calling inside. तो यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरी परीक्षा क्यों करना चाहते हो, you hypocrites। और फिर क्या करते हैं यीशु मसीह? पढ़िए आपकी बाइबल में पढ़िए प्लीज, 18th वर्स पढ़े गुजराती में। आगे 19th वर्स। 19th verse Jesus says, why? 18th verse he says, why put me to tempt you hypocrites? Then 19th verse he says, show me the coin for the text. If you read Mark's Gospel, Jesus says, show me the money that is used for the text. Let me have a look on it. तो ये लोग क्या करते हैं? And they brought him a denarius. वो यीशु मसीह के पास क्या लेके आते हैं? एक सिक्का लेके आते हैं। They bring to him a coin. I have seen the Roman coins, the coin that was used during the day of Jesus. On one side, there was a carved image of Caesar, the great emperor. And on the other side was the numeric unit for that coin. इधरली तरफ किसकी फोटो बनी होती थी सिक्के के? कैसर की। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, बहुत से मैंने रखे हुए हैं वालों ने दिए हुए हैं। See, this side you have the image of one of the most prominent presidents, and on the other side, is South Carolina की बनी हुई है। So during the days of Jesus, the coin, the denarius that was used, they brought immediately to Jesus. On one side, there was the image of Emperor Caesar. So what did Jesus do? I just assume he flipped it in the air and he showed the coin to his tempters. What did Jesus say to them? The 20th verse. And Jesus said to them, whose image and likeness is this? If you read the Aramaic version, you will find Jesus saying, he shows them the coin that is forged in the image of Caesar, the great emperor. And his profound question, now he throws the ball in their court. He says, tell me, in whose image and likeness is this coin forged? ये सिक्का किसकी शक्ल में और किसकी सूरत में ढाला गया? You know, I think 7 or 8 years ago, in India, in New Delhi, there is a place called Mayapuri in West Delhi. That's the place where they forge the coins and make the